Question number 7 of the worksheet on probability. When Don plays tennis, 65% of his first services go into the correct area of the court. If the first service goes into the correct area, his chance of winning the point is 90%. I feel like we should draw a tree diagram. Even if it does, yeah, it does say so, draw a tree diagram. Even if it does not, it really helps to draw a tree diagram. Okay, so when Don plays tennis, 65% of his first services go into the correct area. So I'm going to write correct area here. And the probability of the services going into the correct area is 65%. That would be a probability of 65 by 100. So then the probability of the services not going into the correct area, I'm going to write not correct area. That's going to be 35%. So 35 by 100. If the first service goes into the correct area, the chances of winning the point is 90%. So I'm going to write win. And the probability of winning the point is 90%. So 9 upon 90 upon 100. And then probability of losing the point is going to be 10%. If his first service does not go into the correct area, Don is allowed a second service, and of these 80% go into the correct area. So if it went into it didn't go into the correct area, he get a second chance, and 80% of the time it goes into the correct area. That means 20% of the times it does not go into the correct area. So not correct. तो अगर 80% करेक्ट एरिया में, उसका मतलब है इसका भी विन लॉस बन जाएगा फिर 90 और 10 हाँ, का। बनेगा, बिल्कुल बनेगा. If the second service goes into the correct area, his chance of winning is 60%. तो अब हम 60% इधर लिखेंगे. इसका win है 60. और इसका loss है या losing या whatever. That is going to be 40%. If neither service goes into the correct area, Don loses the point. So अगर दूसरी दफा भी correct area में नहीं गया, तो वो फिर lose कर रहा है. तो उसका मतलब है losing की probability हो जाएगी 1. Because it's definitely losing. और फिर winning की probability हो जाएगी 0. Yeah, you can also write losing की probability हो जाएगी 100%. So you can also write 100 upon 100. ठीक है? It's the last line that I've underlined is telling us कि अगर 2 दफा नहीं गया करेक्ट एरिया में, नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट हुआ है, तो फिर उसने विन नहीं करना, उसने लूज ही करना है. सो लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 और विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो गई 0. Okay, draw a tree diagram to represent this information. Done. Part 2. Using tree diagram, find the probability that Don loses the point. So losing किस किस तरह से हो रही है कि एक तो करेक्ट एरिया में जाके लूज कर रहा है, फिर इनकरेक्ट में फिर ऐड कर देंगे उसको. हाँ, नॉट करेक्ट, करेक्ट, और फिर लूज कर रहा है, और फिर आखिरी क्या है, नॉट करेक्ट और लूज. सो 3 तरह से लूज हो रहा है. लास्ट वन इज नॉट करेक्ट, एंड देन अगेन नॉट करेक्ट, and then losing. So multiply and add all these possibilities. So part 2 is going to be, first branch is 65 by 100.
times 10 by 100 plus second branch is 35 by 100 times 20 by 100. ओ नहीं सॉरी, 35 by 100 पहले नॉट करेक्ट, फिर करेक्ट और फिर लूज. 35 by 100 टाइम्स 80 by 100 टाइम्स 40 by 100 plus the last one is not correct area, and then losing. So 35% times 20% times 1. So when you multiply and add all these fractions, you would get a probability of 0.247. So the probability of losing the point is 0.247. Part 3. Find the conditional probability that Don's first serve went into the correct area given he loses the point. So probability, first time it goes into the correct area. So I'm writing हम correct इस पे area. कंडीशनल यूज करेंगे. जी बिल्कुल. So I'm writing correct area 1 to represent that कि first वाला correct area की बात हो रही है. Given he loses the point, so lose. So probability find करनी है कि Don's first serve went into the correct area given he loses the point. So given का मतलब है बार लिखें और lose लिखें और उसके ऊपर लिखें correct area. First time it should have gone into the correct area. Okay, so we're going to use the formula for the conditional probability that it goes in the correct area for the first time. हमें सही And से पता चलेगा कब कंडीशनल यूज करनी हो कब नहीं, कब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. given that लिखा होता है ना. तो जब भी given, गिवन डैट या इफ लिखा है तो इसका मतलब है यही फॉर्मूला यूज करना है. हाँ जी बिल्कुल. So upon probability of losing. Okay, so what's the probability that it does not go into the correct area in the first time and he loses? So should not go into the correct area for the first time and he loses. Let's see. So यहाँ तो करेक्ट एरिया था फर्स्ट टाइम, तो वो तो नहीं लेना, ये सेकंड लेना है. नॉट करेक्ट एरिया एंड नाउ ही सपोज टू लूज. तो ये अब टू ऑप्शंस है. पहला नॉट करेक्ट एरिया है, नो सॉरी इट सेज करेक्ट एरिया एंड लूजेस, तो मैंने गलत किया. करेक्ट एरिया एंड लूजेस इज दिस वन. करेक्ट एरिया एंड लूजेस, ये हो गया केस. ओके, सो multiply these fractions 65 by 100 times 10 by 100 और डिनोमिनेटर में probability of losing हमने already part 2 में निकाल दिया. So it's going to be 65 by 100 times 10 by 100 probability of correct area and probability that it loses is this, and then probability of losing has already been found in the previous part, 0.247. आपके पास ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में ये आंसर होना चाहिए. मैंने तो डायरेक्ट राउंडेड ऑफ आंसर पीछे से देख के लिखा है, बट यू शुड हैव अ लॉन्गर आंसर दैट यू कैन यूज है टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. और इससे आंसर लिखा हुआ है 0.263. So 0.263 is the answer. If you have any questions, please ask. Okay, next part करते हैं. I mean next question करते हैं.
When Andrea needs a taxi, she rings one of three taxi companies, A, B, and C. 50% of her calls are to taxi company A. So A, 50%, so 50 upon 100. Probability that she calls company B is 30%, 30 by 100. So probability that she calls C is 20%. Okay. A taxi from company A arrives late 4% of the time. So this taxi is going to be late with a probability of 4 by 100. And it's going to be on time with a probability of 96 by 100. Okay. Company B is late. Taxi from company B arrives late 6% of the time. And it's on time 94% of the times. And taxi from company C arrives late 17% of the time. So late and on time 83% of the time. Okay. Find the probability that when Andrea rings for a taxi, it arrives late. Okay. So probability that it arrives late would be कि उसने A टैक्सी बुलाई और वो लेट आती है 4% of the time. फिर या उसने टैक्सी B बुलाई और वो लेट आई 6% of the time. या उसने बुलाई टैक्सी C and that was late 17% of the time. So find all these products and sums. 50% times 4% plus 30 by 100 times 6 by 100 plus 20 by 100 times 17 by 100. 0.072 मैंने अपने पास लिखा हुआ है, but you should have a more accurate answer that you would use in part B. This is part 1. Part 2 is, given that Andrea's taxi arrives late, so अब given that बोला है, that means this is conditional probability. So I'm going to write given late. Find the probability that she rang company B. So it's going to be probability B and late upon probability late. So B and late is going to be 30 by 100 times 6 by 100 upon probability late. ये B and late मैंने यहाँ से लिया. In case you're wondering, B and late. And probability late I've already found in the last part, 0.072. Ideally, you should be using 4 decimal places at least. Okay, this gives 0.25. So 9. Anybody has any questions from question 8? No, ma'am. Okay. A fair dice has 4 faces. One face is colored pink, one is colored orange, and one is colored green.
and one is colored black. 5 such dice are thrown and the number that falls on the green face are counted. The random variable x probability distribution है. ये मेरा नहीं ख्याल, अभी मैं नहीं करा सकती. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया नहीं है. ड्रॉ द टेबल फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. पार्ट 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पार्ट 1 कर लेते हैं. चलो. शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डाइस लैंडिंग ऑन अ ग्रीन फेस इज दिस. ओके, ये हम पार्ट 1 कर सकते हैं. Let's reread the question. मैंने इतनी अच्छी तरह पढ़ा नहीं. A fair dice has 4 faces. One face is colored pink, one is colored orange, one is colored green, and one is colored black. 5 such dice are thrown, and the number that falls on the green face are counted. Random variable x is the number of dice that falls on a green face. Show that the probability of 4 dice landing on the green face is this. अच्छा जी. 5 डाइस थ्रो किए. हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के 4 डाइस जो हैं वो ग्रीन फेस पे लैंड किए. दैट मीन्स हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट मतलब कोई भी चार आउट ऑफ दोस 5, any 4 should have fallen on the green face. So green, 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 and not green. That could be one of the case. पहला ग्रीन आया, दूसरा ग्रीन आया, थर्ड ग्रीन आया, फोर्थ ग्रीन आया, फिफ्थ ग्रीन नहीं आया. दिस इज वन ऑफ द केसेस. सो आई एम गोइंग टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक पिंक है, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है. सो हर डाइस पे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4. सो आई एम गोइंग टू राइट 1/4 फॉर ग्रीन. सेकेंड ग्रीन आने की फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4. और ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4. दैट मीन्स मे बी या ऑरेंज आया है या ब्लैक आया है और या पिंक आया. सो टाइम्स 3/4. सो ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन एंड नॉट ग्रीन की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बट दैट इज नॉट इट. ये यूं भी तो हो सकता है, फर्स्ट ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर नॉट ग्रीन और ग्रीन. दिस नॉट ग्रीन कैन बी हेयर, or it can be here, or it can be here, or it can be here, or it can be here. So you have to do this 5 times. ये 3/4 एक दफा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, एक दफा इधर आ जाएगा, एक दफा इधर, एक दफा इधर और एक दफा इधर. सो यू. मीन्स इफेक्ट कैसे आएगा रिजल्ट? हम्म. मैम अगर 3/4 को कहीं और डाले तो इफेक्ट कैसे आएगा? रिजल्ट सेम ही आना चाहिए. हाँ, लेकिन 5 डाइस है ना. यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि फिफ्थ वाले का ग्रीन नहीं आया, बाकी सबका ग्रीन आया. तो फर्स्ट वाले का नॉन ग्रीन हो गया, वो भी तो केस हो सकता है. या सेकंड वाले का नॉन ग्रीन हो गया, बाकी सबका ग्रीन आ गया. या थर्ड वाले का नॉन ग्रीन हो गया, बाकी सबका ग्रीन आ गया. या फोर्थ वाले का नॉन ग्रीन हो गया और बाकी सबका ग्रीन आ गया. तो 5 केसेस हैं. ठीक है, या तो है इधर नॉट ग्रीन और ग्रीन, 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 ग्रीन. या फर्स्ट ग्रीन, सेकंड इज नॉट ग्रीन एंड ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन. या ग्रीन, ग्रीन, नॉट ग्रीन, 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 green, 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 not green, green, or green, 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 and not green. So ये 5 cases. So सब में probability green की तो वही है 1/4, और not green की भी सब में probability सेम है 3/4. So बजाय कि हम 5 दफा एक ही काम करें, हम इसको into 5 कर देंगे इसके रिजल्ट को. ठीक है, ये आईजी में भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे, इफ यू रिमेम्बर. थोड़े रेयर होते थे, इसमें ज्यादा आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं. कि अभी अभी कोई क्वेश्चन है कि ये 5 क्यों आया? इफ यू रिमेम्बर, हम आईजी में ये केस भी करते थे. एक ब्लैक बॉल आई, एक और ब्लैक बॉल आई और एक रेड बॉल आई. तो अब उसको हम यूं भी करते थे कि ब्लैक, रेड, ब्लैक भी तो हो सकता है, और रेड, ब्लैक, ब्लैक भी हो सकता है. So we would consider all the cases. So this is the same case.
So this answer would be 0.0146. बाकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका अपना चैप्टर है, वो तभी करेंगे when we do that in a few weeks. क्वेश्चन 10 करते हैं. Data about employment for males and females in a small rural area is shown in the table. A person from this area is chosen at random. Let M be the event that the person is male. Let E be the event that the person is employed. Find probability of M. अच्छा जी. तो यहाँ पे क्या है कि 206 अनएम्प्लॉयड मेल हैं और 412 एम्प्लॉयड मेल हैं. एंड सिमिलरली 358 अनएम्प्लॉयड मेल है, फीमेल है, और 305 एम्प्लॉयड फीमेल है. हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के मेल मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो हाउ मेनी मेल्स डू वी हैव इन टोटल इन द डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल in the data. So for part 1, probability of male would be, न्यूमरेटर में टोटल कितने मेल्स आ गए 206 plus 412, और डिनोमिनेटर इज all the people. Answer for 10 1 would be 206 upon 427. पार्ट 2, फाइंड हमने करना है कि जो मेल है एंड एम्प्लॉयड है. सो दैट मीन्स न्यूमरेटर में एम्प्लॉयड मेल्स और डिनोमिनेटर में टोटल. So it's going to be, how many employed males do we have in the data? 412 divided by total 206 plus 412 plus 358 plus 305. जो भी है ये. So that would give us, I've written 412 upon 1281. Part 3. Are M and E independent events? Justify your answer. हमें पता है अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी M and E should be the same as probability of M times probability of E. So let's see if that's true or not. यहाँ पे तो आ गया 412 upon 1281 equals probability of 1 is 206 over 427 already found here, and probability of employed people would be, ये क्या होगा, this would be total employed हमारे पास कितने 412 plus 305, और डिनोमिनेटर में we have 206 plus 412 plus 358 plus 305. So you have to see if the left hand side is equals to the right hand side, तो फिर ये independent है, वरना नहीं. So this becomes 717 over 1281. And the product, the left hand side would not be equals to the right hand side. So ये equal नहीं होंगे.
So not independent. Last part. Given that the person chosen is unemployed. अब जब given then कह दिया इसका मतलब है conditional probability का question. Given that the person chosen is unemployed, find the probability that the person is female. So apply the formula. Probability of female and unemployed upon probability of unemployed. So female and unemployed की probability हमने find करनी है. So how many are female and unemployed? 358. So न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी आ गई 358 अपॉन वो जो टोटल है. टोटल में मैंने मुझे एक दफा वैसे सबको ऐड कर ही लेना चाहिए था, जो बार बार करना पड़ा है. दिस इज 1281. So this is 1281. वो यूज करेंगे डिनोमिनेटर में. अब अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ of being unemployed. So ये इतने unemployed है. So that is 206 plus 358 upon the same denominator, total value 1281. So इससे result आएगा 179 over 282. Okay. क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो. Okay, then I'm copying question 11. Boxes of sweets contain toffees and chocolates. Box A contains 6 toffees, 4 chocolates. Box B contains 5 toffees, 3 chocolates. Box C contains 3 toffees, 7 chocolates. One of the boxes is chosen at random. I'm going to make tree here. So randomly box choose हो रहा है. That means हर box के choose होने की probability would be 1/3. So box A, box B, and box C each has a probability of 1/3 of being chosen. Okay. Box A contains 6 toffees and 4 chocolates. So टॉफी चूज होने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/10 और चॉकलेट चूज होने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10. सिमिलरली बॉक्स बी में 5 टॉफीज हैं. सो टॉफीज चूज होने की प्रोबेबिलिटी है 5/5/8, क्योंकि 8 टोटल कैंडीज है इन बॉक्स बी. और चॉकलेट्स चूज होने की प्रोबेबिलिटी है 3 chocolates 3/8. And similarly for box C, probability of choosing a toffee would be 3/10 and chocolate would be 7/10. Okay. Find the probability that, one of the boxes is chosen at random and 2 sweets are taken out.
one after the other and eaten. Okay, two candies निकाली जा रही हैं. Okay, find the probability that they are both toffees. So अब हमने find करना है probability कि box A choose हुआ और उसमें टॉफी चूज हुई और दोबारा टॉफी चूज हुई बिकॉज दे ड्रॉइंग टू कैंडीज. और बॉक्स बी में से टॉफी निकली और फिर से टॉफी निकली. एंड सेम फॉर बॉक्स सी. और box C got chosen and the first candy drawn is a toffee and also the second candy drawn is a toffee. So box A की जो probability 1/3 है. What's the probability of getting a toffee uh, the first time? Box A में से टॉफी चूज हुई है. So this is the probability 6/10. Now what's going to be the probability that the second candy he's drawing from box A is also a toffee? 10 में से 6 थी पहले. So the probability of choosing a toffee was 6/10. अब एक तो निकल आई. So this fraction is now going to become 5/9. So we write 5/9. Or is plus probability of choosing box B is 1/3. Probability of getting the toffee the first time is 5/8. And then probability of getting a toffee again was going to be 4/7. Plus box C is 1/3. The probability of choosing box C is 1/3. Probability of getting the candy the first time is 3/10. And probability of getting a candy again is going to be 2/9. Find this product in sum. That comes out to be 53/210. Part 2. Given that they are both toffees, so probability, given that they're both toffees, I'm writing slash. So toffee लिखते हैं. So given that they're both toffees, वो हम part 1 में निकाल चुके हैं. Find the probability that they came from box A. So box A choose हुआ है और उसमें toffee/toffee आई है. So find this conditional probability, use the same formula. ये जो हमने लिखा है इसके साथ एंड आ जाता है. बॉक्स ए चूज हुआ है एंड 2 दफा टॉफीज निकली हैं इसमें से. Probable denominator is probability of getting 2 toffees from any of the box. So box A is 1/3. Probability of getting the toffee for the first time is 6/10. And probability of getting the toffee again is 5/9. यहाँ हमने किया हुआ. Upon probability of getting toffee and toffee, which is this 53/210. यहां से आगे. क्वेश्चन 11 part 2 का आंसर है 70/159. Okay, that's all for today. I'll leave you guys with some homework. Please उसको कर लेना. चलो, take care. और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज stay back.